तो ये देखो दोस्तों, अभी मैं इस मूर्ति को फिनिशिंग कर रहा हूँ। इसका क्रैक जो है, क्रैक को बंद कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानना चाहते हो कि इस मूर्ति को कौन सा मिट्टी से क्रैक, ये जो कौन सा मिट्टी से क्रैक को बंद किया और डाइस को कैसे किया, अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हो, डाइस को कितना मोटा करना चाहिए, ठीक है, कितना लेयर को कितना बार देना चाहिए, बिल्कुल डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक वीडियो डिटेल्स में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है।